रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल सी एंड डी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि हमारे पुराने साथी जानते हैं कि हमने डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूल ए और बी के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। होप आपने वो वीडियो सारी देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो काइंडली चैनल पे चले जाइए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है बहुत सारे नोट्स पा सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में और पीपीटी वगैरह भी। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आईबीएफ ने रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल सी एंड डी के बारे में जानते हैं। आप एक बार स्क्रीन नोट कर लीजिए। मॉड्यूल सी में ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली फंक्शंस हैं उसके। सेकेंडली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वगैरह। थर्ड है इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। इसमें से क्या आता है आपका सीडी, सीपी, आईबीपी, सिक्योरिटाइजेशन एंड फॉरफिटिंग। फ्रेंड्स, ट्रेजरी मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो काइंडली इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कमर्शियल पेपर्स, हाँ जी, वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम सिलेबस एक बार डिस्कस कर रहे हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। मॉड्यूल डी में जो है कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट प्लानिंग के बारे में आएगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी, बेसल 2, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द अप्रोच ऑफ बैंक्स टू प्रॉफिटेबिलिटी, इफेक्ट्स ऑफ एनपीए। इंटीरियर ट्रेजरी, देखिए फ्रेंड्स, बैंक्स की बहुत अच्छी इनकम जो है ट्रेजरी से होती है। ट्रेजरी में बेसिकली काम क्या होता है, फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे मान लो आप विदेश घूमने जा रहे हैं, तो आपने को डॉलर की ज़रूरत होगी। किसी और कंट्री में जैसे कनाडा जा रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ज़रूरत होगी। तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही सब काम जो है आपके फॉरेक्स में होंगे। और प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करिए स्लाइड के ऊपर। इंटीरियर ट्रेजरी रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मनी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। देखो तीन चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं, ये तीनों पे फोकस रहेगा हमारा। एक तो मनी मार्केट, हाँ, कॉल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज। जैसे फंक्शंस क्या है आप ट्रेजरी के देखिए। मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, हमें कितना अपने पास डॉलर रखना है। देखिए बहुत ज़्यादा डॉलर रख लें और डॉलर की वैल्यू कम हो जाए फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर अप्रिशिएट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम होगी तो फिर हमारे लिए लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंट मर्चेंट सर्विसेज, हमें जो है सर्विसेज देनी है, जैसे कि हमें डॉलर एक्सचेंज करके देना है या किसी को पैसा ट्रांसफर कराना है, तो एट अ टाइम होना चाहिए। ग्लोबल कैश मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस कि हम कहीं ज़्यादा ओवर बाइंग ना कर लें। असिस्टिंग बैंक मैनेजमेंट इन एएलएम, एसेट लायबिलिटी मिसमैच ना हो। ठीक है जी। तो अपना जो ट्रेजरी में ये तीन ऑफिसेज होते हैं। डीलिंग रूम, जहाँ की डील वगैरह ली जाती है। मिड ऑफिस, एमआई इसका काम करते हैं। बैक ऑफिस जो सेटलमेंट करती है। ठीक है, ये चार्ट के जहाँ पे भी स्लाइड का आपको जरूरत लगे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो इसके बाद चार्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहले तो एक मिनट मैं इसको प्रॉपर ठीक छोटा कर दूँ। अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट में क्या आता है? कॉल इन नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, सीडी, आईसीडी, सीपी, रेपो, कमर्शियल बिल।
और डेप्ट मार्केट में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बॉन्ड्स में क्या आता है, एफआई बॉन्ड्स, पीएसयू बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स ये एक सिर्फ चार्ट है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इंटर बैंक टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स और कॉल मनी। सर्टिफिकेट डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, उसांस प्रॉमिसरी नोट्स होता है, इसकी मैच्योरिटी लेस देन 7 डेज अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। मतलब ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आया कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट की मिनिमम मैक्सिमम कितनी एक्सपायरी होती है, तो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर। सर्टिफिकेट डिपॉजिट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 सेंट्रल बैंक। दे आर लाइक द बैंक टर्म डिपॉजिट्स accounts like traditional term time deposit. These are freely negotiable instruments and are often referred as negotiable certificate of deposits. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट। इशूड बाय ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट आरआरबीज, मिनिमम पीरियड 7 दिन, मैक्सिमम 1 साल। ये वाली लाइन आपने कमर्शियल सर्टिफिकेट डिपॉजिट में याद रखनी है। मिनिमम अमाउंट 1 लाख और मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, सीआरआर एसएलआर आर टू बी मेंटेन्ड। ये ध्यान रखें, ये कई बार 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन आया है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स आर टू बी स्टैम्प्ड। कमर्शियल पेपर की बात करेंगे। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि हु कैन इशू कमर्शियल पेपर्स, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट borrowers, primary dealers and all India financial institutions. Eligibility क्या है, the tangible net worth of the company as per the latest audited balance sheet should not be less than 4 crore। ये याद रखें, 4 करोड़ कम से कम होनी चाहिए। Working capital based fund based limit of the company has been sanctioned by banks। Borrower account of the company is classified as a standard asset by the financing company। Rating requirement, all eligible participants should obtain the credit rating for issuance of commercial paper। Credit रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रिजिल, इकरा। ये फ्रेंड्स आप इसको जो है फुल फॉर्म वगैरह सब ये नोट कर लें, ये कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो फुल फॉर्म आ जाती है जेआईबी के पेपर में। केयर इज क्रेडिट एनालिसिस एंड सर्च लिमिटेड, पिच रेटिंग्स डफ एंड फ्लैप्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DCR। The minimum credit rating shall be P2 of CRISIL or such equivalent rating by other agencies। Commercial papers can be issued for maturities between 7 days to maximum 1 year from the date of issue। Minimum issue price 5 lakh and multiples of 5 lakh, issued in demat form only। Commercial paper yield calculation, face value minus price। ये सिर्फ आप फॉर्मूला देख लीजिए और एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। जब न्यूमेरिकल का पोर्शन हम करवाएंगे तब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी फोटो खींच लीजिए बस। मीनिंग ऑफ रेपो, रेपो और रिवर्स रेपो पे पहले क्वेश्चन आते थे, अब कुछ टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अब नहीं आएंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चनर का मन में, वो ये भी कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ रेपो, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, इट इज अ ट्रांजैक्शन इन व्हिच टू पार्टीज एग्री टू सेल एंड रीपरचेज द सेम सिक्योरिटी एट अ म्यूचुअली decided future rate and a price। The repo and reverse repo transactions can only be done at Mumbai between two parties approved by the RBI and securities approved by the RBI। Treasury bills सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की में ही हो सकती हैं। Repo, uses of repo, it helps bank to invest surplus cash, it helps banks to raise funds at better rates। Surplus SLR surplus and CRR deficit bank can use the repo deals as a convenient way of adjusting SLR and CLR positions simultaneously। RBI uses repo and reverse repo as instruments for liquidity adjustment in the system। कूपन रेट एंड यील्ड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार आ जाता है, तो देखें प्लीज।
The difference between coupon rate and yield arises because the market price of a security might be different from the face value of the security. Since coupon payments are calculated on the face value, the coupon rate is different from the yield. जो कूपन होगा उसमें उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी और कूपन रेट पे उसको पैसे बार बार मिलते रहेंगे. एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रेंड्स. इन न्यूमेरिकल्स वगैरह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. कॉल मनी, द मनी दैट इज लेंट फॉर वन डे इज कॉल्ड एज कॉल मनी. हमेशा ध्यान रखें कॉल मनी क्या है, एक दिन के लिए पैसा जब उधार दिया जाता है. इफ इट एक्सीड्स बिटवीन for more than 1 day and less than 15 days it is called as notice money. तो उसको क्या बोल देते हैं, नोटिस मनी बोल देते हैं. तो समझ में आ गया आपके कॉल मनी और नोटिस मनी के बीच में डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट देखिए, call money market banks borrow in this market for the following purposes: to fill the gaps or temporary mismatches in funds, to meet the CRR and SLR mandatory requirements as stipulated by the central bank, to meet sudden demand for demands arising out of large outflows. क्या हुआ, आपके यहाँ कोई एफडी बनवाने के लिए आया, बड़ी एफडी थी 5 करोड़ की 1 साल के लिए, लेकिन क्या हुआ उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो 1 महीने बाद ही तोड़ लेता है. तो आपने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, है ना. बैंक इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में. तो अब पैसा चाहिए एकदम से, तो इसलिए जो है लिक्विडिटी क्रंच आ गया, तब ये चीज़ें काम आती है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट्स. द फैक्टर्स व्हिच गवर्न द इंटरेस्ट रेट्स आर मोस्टली इकोनॉमी रिलेटेड, दैट इज डिमांड फॉर मनी, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, supply of money, inflation rate, and RBA and government, which determine some of the variables mentioned above. Gilt-edged securities. The term government securities encompass all bonds and treasury bills issued by the government, central government and state governments. These securities are normally referred to as gilt-edged as repayments of principal as well as interest are totally secured by government, by sovereign government. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे ट्रेजरी बिल्स. Treasury bills, commonly referred to as treasury bills, are issued by Government of India against their short-term borrowing requirements with maturities ranging between 14 to 364 days. All these are issued at a discount to face value. For example, a treasury bill of rupees 100 face value issued for rupees 91.50 gets redeemed at the end of its tenure at rupees 100. Who can invest in treasury bills? Banks, primary dealers, state governments, provident funds, financial institutions, insurance companies, NBFCs, FIAs, as per prescribed norms. NRIs and OCBs can invest in treasury bills. What is auction of securities? Auction is a process of calling of bids with an objective of arriving at the market price. It is basically a price discovery mechanism. Debenture. Debenture is a debt security issued by a company called the issuer, which offers to pay interest in lieu of the money borrowed for a certain period. These are long-term debt instruments issued by private sector companies. These are issued in denominations as low as rupees 1000, have maturities ranging between 1 and 10 years. Difference between debenture and bond. Long-term debt securities issued by the Government of India or any of the state governments or undertakings owned by them or by development financial institutions or are called as bonds. Instruments issued by other entities are called as debentures. It is calculated by dividing the coupon rate by the purchase price of the bond. फ्रेंड्स, इनकी फोटोज अगर लेना हो तो ले सकते हो क्वेश्चंस की, लेकिन न्यूमेरिकल हम बाद में ही करेंगे. Primary dealers. Primary dealers can be referred to as merchant bankers to Government of India, comprising the first tier of the government securities market. These are formed during the year 94 to 96 to strengthen the market infrastructure. What role do primary dealers play? Primary dealers का क्या काम है? Commit participation as principal in Government of India issues, so bidding in auctions, provide underwriting services, offer firms, buy, sell, bid, ask quotes for treasury bills and related
सिक्योरिटीज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी डेप्ट। OMO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ मार्केट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म ऑफन रिसोर्टेड to by RBI. Under OMO operations, RBI as a market regulator keeps buying or selling securities through its open market window. Its decision to sell or buy is influenced by the factor of overall liquidity system. Yield curve. The relationship between time and yield on a homogeneous risk class of securities is called the yield curve. The relationship between represents the time value of money, showing that people who demand a positive rate of return on the money they are willing to part today. Shape of yield curve. A yield curve can be positive, neutral, or flat. Positive means which is most natural is when the slope of the curve is positive, that is the yield at the longer end is higher than the shorter end of the time axis. Neutral, zero slope, flat across both. Negative is in which there is a slope is negative, that is the long term yield is lower than the short term yield. ये फ्रेंड्स इसकी फोटो ले लीजिए शेप ऑफ कर्व की। लाइबर का फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट एंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट व्हिच द बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम द अदर बैंक्स इज मार्केटेबल size in the London interbank market. LIBOR is the most widely used benchmark or reference rate for short-term interest rates. It is complied by the British Bankers Association as the free service and released to the market at about 11 London time each day. Calculation of duration, SLR and CRR. CRR 3% and SLR 20% of demand and time liabilities of the bank respectively under the RBI Act 1934. The minimum maximum SLR are described at 25% and 40% of the DTL respectively under the Banking Regulation Act 1949. SLR और CRR जो है RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग आता है और ये फोर्टनाइटली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। Demand and time liabilities. Demand deposit are current saving account ESO, time deposit, fixed deposit, recurring deposits, overseas borrowings वगैरह, foreign output remittances in transit. SLR is to be maintained in the form of the following assets: cash balances excluding balances maintained for CRR, gold valued at price not exceeding current market price, approved securities valued as per norms prescribed by RBI. VAR. Value at risk is the most probable loss that we may incur in normal market conditions over a given period due to the volatility of factor, exchange rates, interest rates वगैरह. VAR is the estimate of the potential loss always for a given period at a given confidence level. Exchange rate quotation. Exchange quotations. There are two methods. Exchange rate is expressed as the price per unit of foreign currency in terms of the home currency is known as the home currency quotation. Foreign currency quotation indirect quotation है. यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए. Buy low, sell high. It is a direct quotation. Indirect quotation है buy high and sell low. TT buying rate. TT is telegraphic transfer. This is the rate applied when the transaction does not involve any delay in realization of the foreign exchange by the bank. In other words, the nostro account of the bank would already have been credited. The rate is calculated by deducting from the interbank buying rate. The exchange margin is determined by the bank. जो हम कोई वायर ट्रांसफर वगैरह लेंगे तो उस आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उसके ऊपर जो कमीशन है वो हम काट लेंगे इसमें से. Bills buying rate. This is the rate to be applied when a foreign bill is purchased. When a bill is purchased, the proceeds will be realized by the bank after the bill is presented to the drawing at the overseas center. In the case of sans bill, the proceeds will be realized on the due date of the bill, which includes the transit period and the sans period of the bill. Swap agreement between two parties commits each counterparty to exchange an amount of funds determined by a formula at regular intervals until the swap expires. In the case of a currency swap, there is an initial exchange of currency and a reverse exchange at maturity. Basel 1 to Basel 3 इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो काइंडली इसको भी पढ़ेंगे आप ध्यान से. मिनिमम 3 पिलर्स होते हैं Basel 1 to 3 में. न्यू क्रेडिट
risk approaches, market risk unchanged and add operational risk proportion। तो ये पिलर 1, 2, 3 का बनाया हुआ है, इसके आप अगर क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं। पिलर बेसल 2 क्या काम करता है? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, तीन को देखता है। Calculation of regulatory minimum capital requirement, the amount of capital upon total risk-weighted asset should be greater than equal to 8%। minimum capital होना चाहिए। Capital is Tier 1 capital plus Tier 2 plus adjustment। Total risk-weighted assets are determined by multiplying the capital requirements of market risk and operational risk by 12.5 and adding the resulting figures to the sum of risk-weighted assets for credit risk। Credit risk is standardized approach, foundation IRB approach and advanced IRB approach। Standardized approaches in determining the risk weights in the standardized approach, banks may use assessments by external credit assessment institutions। Credit risk IRB approach. In the IRB approach, it's based on banks' internal assessment. The approach combines the quantitative inputs provided by banks and formulas specified by the committee। Credit risk IRB approach: 4 quantitative inputs, risk components, probability of default, loss, even default, exposure at default, maturity. Use formula of the committee to calculate the minimum requirements। Standardized method: the standards of the committee, internal models, use banks' internal assessments (BAR). Operational risk: the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or external events, basic indicator approach, standardized approach and advanced measurement approach। ऑपरेशन रिस्क का ये इंडिकेटर है, तो देख लेंगे। ऑपरेशन रिस्क एडवांस मेजरमेंट अप्रोचेस: अंडर द AMA the regulatory capital requirement will equal the risk measure generated by the bank's internal operational risk measurement system using the quantitative and qualitative criteria for the AMA। use the AMA is subject to supervisory approval। Supervisory review में principle 1, banks should have a process of assessing and maintaining their overall capital adequacy। Principle 2, supervisors should review and evaluate banks' internal capital adequacy assessments and trust strategies। Supervisory review: supervisors should expect banks to operate above the minimum regulatory capital ratios। Principle 4, supervisors should intervene at an early stage to prevent capital from falling below the minimum levels। Pillar 3, market discipline: the purpose of Pillar 3 is to complement the Pillar 1 and Pillar 2, develop a set of disclosure requirements to allow market participants to assess information about a bank's risk profile and capital and level of capitalization। फ्रेंड्स, ये PPT अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो काइंडली अगर जो कोई JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज: Tier 1 capital to total risk weighted credit exposure to be not less than 4%, total capital, that is Tier 1 plus Tier 2 less certain reductions to total risk weighted credit exposures to be not less than 8%. Tier 1 capital, the ordinary share capital or equity of the bank and the audited revenue reserves, example retained earnings less current year's losses, future tax benefits and intangible assets, that is goodwill। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको कि हम छू नहीं सकते, जैसे कि कोई किसी की गुडविल है, किसी का रेपुटेशन है, कोई कंपनी है उसका नाम चल रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या है, इंटेंजिबल होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते। Upper Tier 2 capital, unaudited retained earnings, revaluation reserves, general provisions for bad debts, perpetual cumulative preference shares, perpetual subordinated debts। Lower Tier 2 capital, subordinated debt with a term of at least 5 years, redeemable preference shares which may not be redeemed for at least 5 years। Restriction: Tier 2 capital may not exceed 100% of Tier 1 capital. Lower Tier 2 capital may not exceed 50% of Tier 1 capital. Lower Tier 2 capital is amortized on a straight line basis over the last 5 years of its life। मॉड्यूल डी में आएंगे कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, लोन्स एंड एडवांसेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो IRAC नॉर्म्स क्या आए थे इन द ईयर 92 to 93 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमेटी।
to line the international practices and to move towards greater consistency and transparency in the balance sheet of the banks. The income is not recognized on accrual basis as was done prior to 92-93, but is recognized based on the record of actual recovery. The assets are classified into different categories mainly based on record of recovery. Assets performing and non-performing. Assets which are earning income to the bank on an actual realization basis. These include regular and temporarily irregular accounts. NPAs which are not performing to generate income for the bank. ये चार्ट देख लीजिए एक बार, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस. डाउटफुल में डाउटफुल 1 जो है 1 साल तक रहेगा, 1 साल से 3 साल तक 2 में, और 3 से ज़्यादा है डाउटफुल 3 में. Standard asset is one which does not disclose any problem and also does not carry more than normal risk attached to the business. लॉस कब हो जाएगा? जब सिक्योरिटी ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल. A loss asset is one where the loss has been identified by the bank or internal or external auditors, RBI inspectors. Classification loss is not linked to the age of the NPA but linked to the realizable value of the security. मान लीजिए आपने कोई कार का लोन दिया और कार बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, तो वो क्या हो गया? लॉस एसेट हो गया. ठीक है. ये एक एग्जांपल देके बताया. Asset classification. All accounts of a borrower required to be classified under a single category, one NPA or NPA. Capital management and profit planning. Basel II. Tier 1 core capital, paid up capital, free reserves and unallocated separate. Tier 2 supplementary capital, subordinated debts of more than 5 years, maturity, loan loss reserve, revaluation reserve, investment fluctuation reserve, limited life preference share restricted to 100% of Tier 1 capital. Tier 3 subordinated debt with short term maturity, minimum 2 years for risk, market risk. फ्रेंड्स बस सिर्फ आप ये वीडियो 2-3 बार सुन लीजिए तो आपका ये सारा रिपेयर अपने आप ही हो जाएगा. कोई इसमें थ्योरी है सारी, कोई रटने जैसा ही है सारा. टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं? क्रेडिट रिस्क प्लस 12.5% of capital requirement for market risk plus 12.5% of capital more requirement for operational risk. 3 pillars. First pillar is minimum capital requirement, second pillar is supervisory review, and third pillar is market discipline. Standardized approach for operations risk. Beta factor. Beta factor percentage set by Basel Committee, maximum 18%, minimum 12%. Banks activities are divided into 8 business lines: corporate finance, trading, retail banking, commercial banking, payment and settlement agency services. Asset classification: standard asset, substandard asset, doubtful and loss asset. Standard assets 0.40%, substandard secured provision 10%. Doubtful one, first 12 months. Doubtful one, first 12 months का provision 20% larger value of security plus 100% shortfall of security. Doubtful 2 में आ जाएगा, उसके आगे 12 और 24 months, provision 30% larger value of security plus 100% shortfall of security. Doubtful 3 for over 36 months, 100% provisioning and loss assets. ये thank you friends for listening me and have best wishes. May your exam will give you good marks. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, सो दैट अगर कुछ नया अपडेट आता है या कुछ नोट्स शेयर करने हैं तो ईजी हो जाते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.